Okay guys, so in this video we're going to talk about AMD or PO3, okay? Some will say AMD or some will say PO3, okay? And this is basically a ICT concept. And AMD stands for basically accumulation, manipulation and distribution, and PO3 stands for power of three. So what is AMD? So AMD stands for basically accumulation, manipulation and distribution. नाम से ही समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है. ओके, like market is going to accumulate, then market is going to manipulate, and then market is going to distribute. Okay, and this can be very good topic and important topic for you, and I believe this can help you in your trading journey to understand the market more clearly. So make sure watch this video till end. So a program that runs within the algorithm to manipulate and engineer liquidity. As we discuss on the algorithm section कि मार्केट मैनिपुलेट करता है, राइट. मार्केट का काम है कि मार्केट एक लिक्विडिटी से दूसरा लिक्विडिटी स्विप करे बेसिकली, राइट, एंड टू क्रिएट लिक्विडिटी ताकि रिटेलर्स और न्यू ट्रेडर्स वहाँ पे फंसे मार्केट में, राइट. It designed with human emotion within its logic. The program consists of a three-phase cycle, and I hope now you know what is three-phase cycle. The three-phase cycle is basically accumulation, manipulation and distribution. हम लोग एक एक करके समझेंगे accumulation, manipulation and distribution. So let's discuss about accumulation. Every accumulation start with consolidation. You will see this type of consolidation. Okay, so this is basically accumulation phase. And when market is accumulating, you will see this buy side liquidity. Buy side liquidity means this resistance you can see, this high you can see. So above this high, what we have? Liquidity. So we can label this buy side liquidity, and downside what we have? This is as a retail support, right? So we have this sell side liquidity. So below this support, what we have? We have liquidity. So when market is in consolidation, जैसे मार्केट इज इन कंसोलिडेशन, और ऐसा नहीं कि मार्केट एग्जैक्ट इस टाइप का कंसोलिडेशन होना होगा. ओके, आई विल शो यू सम एग्जांपल ताकि अच्छे से और समझ में आए. ओके, so every accumulation start with this consolidation, and when this consolidation happen, we have buy side liquidity and we have this sell side liquidity. So both side liquidity resting, right? Then manipulation comes in. Okay, after accumulation you will see market manipulate to one side. Okay, so let's say for here market manipulated to the downside. Okay, market grab this sell side liquidity. Okay, now we have this buy side liquidity still resting, right? And मैं ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट का काम है कि मार्केट एक लिक्विडिटी स्विप करे फिर दूसरा लिक्विडिटी के ओर जाए बेसिकली, राइट. सो हियर वी हैव ग्रैब्ड दिस sell side liquidity. Now where the liquidity is resting? Above this buy side liquidity, right? So you can see on accumulation market consolidated, on manipulation market traded to the downside. Okay, you can see market expanded to the downside, and this thing happened because the retail traders को लगे कि market is going to trade lower and lower. Okay, and they start taking sell position, and then market start reversing. What I mean this, okay, this is what I was saying. So on consolidation, on accumulation, market accumulated order, then market manipulated to the downside, manipulated to the wrong side, ताकि लोग को लगे कि ट्रेंड लोअर है. ओके, मार्केट मैनिपुलेट होगा डाउन साइड, एंड देन यू विल सी सडन एक्सपेंशन टू द अप साइड टू ग्रैब दिस बाई साइड लिक्विडिटी. And this is basically accumulation, manipulation and distribution phase. Whatever I am teaching you guys in this example, it can apply on just opposite. Okay, so let's say market accumulated, हो सकता है मार्केट पहले मैनिपुलेट करे अप साइड, देन मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करे डाउन साइड. ओके, सो वट एवर आई टीच इट अप्लाइज ऑन बोथ साइड. ओके, सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सो लेट्स डाइव डीपर हियर. So let's say for example, we're going to take example right now market profile is, let's say, bullish. Okay, and it same applies for the bearish side. So let's say we have this buy side liquidity, or let's say we have some fair value gap जो कि fill नहीं हुआ है, या let's say we have some old high that can be previous day high, previous week high, previous month high, or some equal high. So that's what we refer as a buy side liquidity, or maybe we have some fair value gap or imbalance that is unfilled basically. Okay, so we have some, let's say, nice liquidity resting here. Okay, and that what we going to target here. Okay, so let's say price was
bullish here, okay, and here you can see this accumulation basically, okay. You can see this consolidation, and this is basically accumulation phase, okay. What we have now, we have this sell side liquidity, right? हम लोग का यहाँ पे sell side liquidity, इसके नीचे क्या है, इस लो के नीचे क्या है, liquidity, और ये high के ऊपर क्या है, liquidity, okay. So this is accumulation, okay. Now we're looking for the manipulation part, okay. So this is now our manipulation phase, right? ये हम लोग का manipulation phase है, and in this manipulation market grabbed what? Market grabbed this sell side liquidity. We have this buy side liquidity still resting, right? So ये हम लोग का high है, अभी तक ये liquidity tap नहीं हुआ, and we have this main target buy side liquidity, okay. So accumulation, market manipulated to the downside. When market manipulate, okay, because market profile was bullish, so we was looking for the long, right? And हम लोग long basically क्यों देख रहे होंगे, क्योंकि market sell side liquidity स्विप कर चुका है, and market का sell side liquidity स्विप कर चुका है, तो opposite side liquidity अब chances है कि market opposite side ट्रेड करे and opposite side का liquidity टैप करे, राइट? तो हम लोग का ये बाई साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन का ये जो टॉप है, ये लिक्विडिटी टैप नहीं हुआ है, एंड ये जो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव दिस बाय साइड लिक्विडिटी रेस्टिंग. Now the question may becomes where we enter. Okay, we enter basically on the manipulation part. Okay, if you see this accumulation phase when market manipulate to the downside and your bias is bullish, you was looking for some bullish move because we have some nice liquidity resting to the upside. Let's say when market was doing manipulation, the market manipulate होगा, तो मार्केट बेसिकली वहां से रिवर्स करेगा अगर वहां पे कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर है, या मे बी मार्केट कुछ और लिक्विडिटी नीचे स्विप करेगा, देन मे बी वहां से रिवर्स करे टू द अपोजिट साइड. ओके, सो व्हेन मार्केट विल डू मैनिपुलेशन, यू विल सी मार्केट ट्रेड टू लेट्स से जब मार्केट इस लो से फॉर एग्जांपल इस हाई तक गया था, तो मे बी यहाँ पे हम लोग कुछ 4 आवर 1 आवर हाई टाइम फ्रेम या जो भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, मे बी उस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो या ब्रेकर ब्लॉक हो, बेसिकली कोई एक इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट हो, तो हियर वी लुक फॉर द एंट्री बेसिकली. ओके, और मे बी इस मार्केट कुछ लिक्विडिटी स्विप किया होगा, तो मार्केट मैनिपुलेट किया होगा. ओके, देन वी लुक फॉर द सेटअप ऑन मैनिपुलेशन बेसिकली. ओके, and then we expect price to reverse and to basically distribute to the upside and to grab basically the final target buy side liquidity. So this makes basically accumulation, manipulation and distribution. Okay, so here you can see market accumulated, we have this buy side liquidity, sell side liquidity, market manipulated to the downside to grab this sell side liquidity, and let's say we have this fair value gap here, for example, market filled this fair value gap during manipulation, and then market expanded to the upside, distributed to the upside to grab buy side liquidity of this buy side liquidity plus this final target buy side liquidity. Okay, or you can look for the entry when market give you change of character or lower time frame conformation, basically जो कि हम लोग डिस्कस किए थे, how to enter a trade basically on lower time frame conformation. So you can you can use this model in your trading, and you can utilize this model and you can trade, and you can see how it goes. Okay, so let's see some example. So here you can see a very nice accumulation. Okay, why I am saying this accumulation, because you can see price was basically in consolidation, right? Price was in basically a consolidation, right? And let's say we have this previous day low, and let's say we have this sell side liquidity resting. Okay, so जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था accumulation, that was in lower time frame. I am showing this higher time frame ताकि तुम लोग अच्छे से लिक्विडिटी देख पाओ कि मैं किसको सेल साइड लिक्विडिटी बोल रहा हूँ. सो इफ यू गो टू द लास्ट स्लाइड, यू कैन सी दिस एक्यूमुलेशन फेज, राइट? एंड यही चीज़ हम लोग एक टाइम फ्रेम ऊपर में. ओके, सो दिस ब्लू बॉक्स इज बेसिकली एक्यूमुलेशन. यू कैन सी दिस इज बेसिकली आवर प्रीवियस डे लो. ओके, ये प्रीवियस डे लो था हम लोग का. वी हैव दिस इक्वल लो and we have this big equal low, and below this equal low what we have, this fair value gap also. So we're looking for price to trade to the downside basically, right? So here you can see price was accumulated, price manipulated to the downside, and जैसे मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अगर मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है तो आइदर जब मार्केट मैनिपुलेट हो रहा होगा
तो बेसिकली मार्केट कुछ लिक्विडिटी स्विप करे या फिर मे बी फेयर वैल्यू गैप फिल करे। और जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया तो मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था, बिलो दिस सेल साइड लिक्विडिटी वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप ऑल्सो। When market was accumulating, we have this sell side liquidity, right? हम लोग के पास ये sell side liquidity था, and we have this buy side liquidity also. Now market manipulated to the downside. Now what we looking? We looking for distribution. We looking for market to trade higher to grab this buy side liquidity basically, जो ये equal high है. Okay, so हम लोग देख रहे थे कि market ये buy side liquidity अब grab करे. जो मार्केट मैनिपुलेट हो चुका है डाउन साइड ऑलरेडी, एंड मार्केट जब मैनिपुलेट हुआ डाउन साइड तो मार्केट प्रीवियस डे लो प्लस जो हम लोग इक्वल लो था उसका लिक्विडिटी स्विप कर चुका है, एंड मार्केट हायर टाइम फ्रेम रेफरेंस पॉइंट में भी है, राइट। एंड हियर यू कैन सी मार्केट देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अप साइड, सो दिस वाज द बेसिकली एक्यूमुलेशन, मार्केट मैनिपुलेटेड टू द डाउन साइड। ओके, अब जो लोग भी इस सपोर्ट में फॉर एग्जांपल बाय ले रहे होंगे सब लॉस में होंगे, राइट। जो भी इस एरिया पे, इस लो पे, इस सपोर्ट पे बाय ले रहे होंगे सब लॉस पे होंगे, एंड सबको लग रहा हो कि मार्केट अब सिर्फ कंटिन्यू करेगा डाउन साइड। Consider this manipulation and then market strongly traded to the upside and distributed to the upside to grab this buy side liquidity। और जितने भी लोग सेल ले रहे होंगे ये सोचिए कि मार्केट is going to step to the downside, they all will be in loss basically, and that's how basically algorithm work basically, and that's how it designed to work basically, right? So how you enter? Either you can, as I said, you can enter basically once market strip the low, and you can look for some fair value gap or order block basically. So here you can see we have this fair value gap left, right, this yellow box. So when market manipulated to the downside, we wait for market to show some reversal sign, right? Wait for some rejection basically. So here you can see when market manipulated, either you can take directly long on this fair value gap. It's totally on you. Personally, I like to wait for the मोर कन्फर्मेशन एंट्री। ओके, क्योंकि मेरे को नहीं बताया कि ये जो मैनिपुलेशन है मे बी और नीचे जाए, राइट। सो आई हैव टू वेट फॉर सम कन्फर्मेशन टू एंटर। ओके, सो मैनिपुलेशन यू हियर यू कैन सी, एंड जब मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी जो ये रेड लाइन देख रहे हो, ये सेल साइड लिक्विडिटी जब मार्केट गैप किया और ये जो ग्रे बॉक्स हम लोग का फेयर वैल्यू गैप था वो फेयर वैल्यू गैप से फिल किया, हियर यू कैन सी मार्केट एक्सपेंडेड टू द अप साइड, राइट, फ्रॉम दिस लो बेसिकली, फ्रॉम दिस लो to this high. Now here we have created this fair value gap, right, and still we have this buy side liquidity resting. So I was looking for market to trade to this buy side liquidity, sorry, to trade to this fair value gap, to fill this fair value gap. Here I look for the long position. I put my stop below this low because this was the last down close candle before the up move. Okay, so here I look for the long। अगर मेरा bias bullish है, अब bullish क्यों है? क्योंकि मार्केट एक्यूमुलेट हो चुका था, मार्केट मैनिपुलेट हो चुका था, तो नाउ आई वाज लुकिंग फॉर दैट डिस्ट्रीब्यूशन टू द अपसाइड, राइट। So that's why my bias was bullish. So that's why I was looking for entry here. So here I can look for entry and I can target this buy side liquidity. Now maybe the question will come where you can look for the SL basically. Let's say for example here you looking for trade. तो जैसे कि फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये। फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे, बट पर्सनली आई लाइक टू पुट माई स्टॉप बिलो दिस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ओके, जो ग्रे वाला है इसके नीचे, एंड आई टारगेट दिस बाय साइड लिक्विडिटी जो ये था हम लोग का। सो दैट्स हाउ यू कैन लुक फॉर ट्रेड, एंड यू विल सी दिस इन एवरी टाइम फ्रेम, ऑन हायर टाइम फ्रेम, ऑन लोअर टाइम फ्रेम, accumulation, manipulation, and distribution. So you have to practice this basically, okay. So let's see one more example. So here you can see price was what price is doing. Price is basically accumulation, right? Basically not, I'll not say accumulation because I don't know price is what price is doing here, right? Uh, the only thing I can see, price is basically consolidating here, right? So we know that price is in maybe in accumulation phase, and let's say we have this price side liquidity resting, and we have this, let's say, balanced price range. Okay, so let me show you. So here we was doing accumulation. Okay, यहाँ पे हम लोग accumulate कर रहे थे जहाँ मेरा cursor है। I'll show you lower time frame, ये basically high time frame है। Here you can see we have this balanced price range. Why I'm saying balanced price range? Basically this is imbalanced flip, right? So we have this balanced price range and we have this buy side liquidity जो हम लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट ये बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करे बेसिकली, राइट।
Here you can see when price was doing accumulated, price traded to the downside. Okay, you can see this manipulation, this red box, market manipulated to the downside to fill this balance price range. Okay, and अगर मार्केट ये बैलेंस प्राइस रेंज फिल कर चुका है, मार्केट एक्यूमुलेट के बाद मार्केट मैनिपुलेट भी हो चुका है, तो अगर आप अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट किस साइड करेगा, अपोजिट साइड, राइट, अपोजिट साइड टारगेट करेगा. ओके, एंड हियर यू कैन सी मार्केट आल्सो ग्रैब दिस इक्वल लो. के ये जो बंच ऑफ इक्वल लो है यहाँ पे, मार्केट ये मैनिपुलेशन जब हुआ तो ये इक्वल लो सब भी स्विप कर गया बेसिकली, राइट. So market accumulated, market manipulated to downside, market filled this balance price in. As I said in starting, अगर market manipulate हो रहा है तो market basically higher time frame institutional point पे आएगा, जैसे कि balance price range, fair value gap और order block को fill करेगा या कुछ liquidity shift करके reverse करेगा, right. Here you can see manipulation, market filled this balance price range, and most of the time you will see market fill फेयर वैल्यू गैप और बैलेंस प्राइस रेंज. ओके, ड्यूरिंग मैनिपुलेशन जब मार्केट मैनिपुलेट हो रहा होगा तो मार्केट बैलेंस प्राइस रेंज या फिर फेयर वैल्यू गैप पे मैक्सिमम टाइम इट कम्स. ओके, so here you can see market manipulated and fill this balance price in. Now what we looking for market to trade to the upside to target this trend line liquidity or this buy side liquidity we have, right. जो मैंने लास्ट स्लाइड में बेसिकली आप लोग को दिखाया, जो कि बाई साइड लिक्विडिटी क्या है, ये हम लोग का इक्वल हाई है जो, राइट. And here you can see how price distributed to the downside, sorry, distributed to the upside, right, and to grab this buy side liquidity basically. So this was the example I wanted to discuss, accumulation, manipulation and distribution, or you can say power of three basically. Okay, so I hope समझ में आ गया होगा कि accumulation, manipulation and distribution क्या है. So and it works on every time frame, you will see this in every time frame, and I hope आप लोग को समझ में आया होगा. अगर कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो सो आई कैन हेल्प यू गाइस, एंड कैन दिस कैन बी very helpful for you for entry. Okay, to know in which phase you are basically. Are you in accumulation, what you are looking now, manipulation, and then maybe you're looking for the distribution, and you can apply this for your entry basically as an entry model basically. Okay, so see you guys on the next video.